Hello बच्चों, here the question is three capacitors each of capacitance C and of breakdown voltage capital V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be. So here's the solution of this question. बच्चों यहाँ पर हमको गिवन है तीन कैपेसिटर्स और तीनों का कैपेसिटेंस है कैपिटल सी और ब्रेकडाउन वोल्टेज है वी. इन सब को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया हुआ है. सो हियर द कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 and capacitor C join in series combination and the potential is V. Here the potential is V and here also the potential is V and the capacitance is capital C, capacitance is C and capacitance is C. तो यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना है इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दैट्स वाई जो नेट कैपेसिटेंस होगा विच इज़ इक्वल्स टू 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 विच इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C and here the 1/C net is equals to 3 divided by C. So here the value of C net is equals to C divided by 3. So this is the net capacitance of the combination. And what is the breakdown voltage? So here the key concept of this question is equals to the net potential difference of this combination is the sum of individual potential across the capacitors. So here the breakdown voltage of this combination V is equals to V1 plus V2 plus V3 and here the potential difference across each capacitor is V and V. So here V1 की वैल्यू is V, V2 की V और V3 की V कैसी होगी V. तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज V डैश is equals to 3V. So now here the value of C net is equals to C divided by 3 and the breakdown voltage V dash is equals to 3V and that is the answer of this question. Now students, let's check which option is correct. So बच्चों यहाँ पर option number 2 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you so much.